SO4 should have some kind of charge Sir, though. SF4. अच्छा SF4 ना? Yes. अच्छा I was thinking SO4. इसमें SF4 में क्या है? SF4 में तो बस आपको सल्फर 4 फ्लोरीन लगा देने हैं बस, ठीक है? नहीं, सल्फर विल हैव मतलब इसका ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, सल्फर के पास एक ये होगा, और वेस्पर थ्योरी के हिसाब से अगर हम करें इसको तो इट विल बी सल्फर, देयर विल बी अ लोन पेयर, और फिर उसके बाद 4 आपके पास. Sir, then the valency becoming 10. हाँ, So is it an extended octet? हाँ, it is an expanded octet, yeah. So is it the same with CLF3? Same with what? CLF3? ClF3. So Cl will have आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 7 होते हैं, राइट? और उसमें से 3 आपने कर दिया बॉन्डिंग, बचे 4, तो 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे, तो 3 3 6, हाँ सेम थिंग, 10 इलेक्ट्रॉन्स. Okay, sir. आफ्टर खत्म ही नहीं हो रहा आपके स्कूल में लगता है केमिकल बॉन्डिंग? No, sir, it's done. अच्छा इट्स डन. क्या स्टार्ट किया फिर उन्होंने? Sir, in organic chemistry. अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया. आईयूपैक स्टार्ट हुआ? क्या स्टार्ट हुआ? So organic chemistry is just done and she started hydrocarbons. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन. अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन ना, ठीक है. Yeah, guys, I will wait 3 more minutes and then we will start. You guys can please turn the cameras on. I will wait 2 more minutes. Siddiqa, Abdul Hamid and Maryam. Assalamu alaikum guys. How are you guys? कैसे हाल चाल है? Oh,
Walaikum salam, sir. Very good, sir. How are you? I'm good, alhamdulillah. I think Siddiqa last class में आप नहीं थे, right? Yes, sir. I missed it because I was preparing for an exam. अच्छा. So did you watch the lecture? No, sir. I just have one more exam left, and after that, I'll watch the missed lecture. Well, what about you, Mariam? Yes, sir. You were also not present in the last lecture, right? Yes, sir. I had exams. So did you watch the lecture? No, sir. Okay. Abdul Hamid, did you watch the lecture? Last class. Okay, guys, can you please turn your cameras off? यार देखिए ये दिक्कत है अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन रिश्ता सिर्फ है जो रिश्ता यहाँ पे कर पाएंगे अदरवाइज मे बी नॉट एबल टू डू सो प्लीज राइट अ शॉर्ट क्वेश्चन Siddiqa, you can't turn the videos on today. Siddiqa and Martin. Sir, I'm not feeling well today. Could you excuse it? Fine, not a problem.
Guys, send me once you're done. Send me once you're done. You have four more minutes, maybe more than enough. You guys have 2 more minutes. Okay, I've got the answer from Harsha. नहीं ना. Harsha, OH, if it is acting as a substituent, then what do we write? If OH is acting as a substituent, Harsha, you got the mistake. So in the second one. No, first one में ना. देखिए, first one में आपके पास तो functional group oic acid है और OH is acting as a substituent ना. Yes. So, if OH is acting as substituent, then what's going to happen? क्या नाम होता है OH as a, please look at the substituent ना. Yes, it was. जी, देखिए यही तो है मरियम, आप रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था. ठीक है. Cl, so first of all, functional group, it is going to be oic acid because it is COOH. You know what, guys, Mariam, Martin, Abdul Hamid, if you are not able to do this, I would suggest that you go leave the class and go watch the recording, previous lecture. No use of being in this class because आपको नहीं समझ में आएगा. Okay, I think all of you guys were absent in the last lecture. No one was present except Harsha. So you please leave this class, watch the recording, and then come back tomorrow. So for tomorrow's class, we will have नहीं, अगले क्लास में, कल की क्लास में आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी नॉमेनक्लेचर की. तो आप लोग कम से कम लेकिन रिकॉर्डिंग सारा देख लें कल से क्लास के पहले से पहले. हाँ अब्दुल हमीद, तो आप दोनों का देखिए फिर रिकॉर्डिंग. I mean, there is no use of being in this class. ठीक है? It's better that you take up this time to watch the recording. Okay, all of you guys, Siddiqa, Martin, Abdul Hamid, and Mariam. Okay, you guys can leave the class. We'll meet tomorrow. Okay, please, but please watch the lecture. Okay, अभी ऐसा नहीं कि चले जाइए यहाँ से और lecture भी नहीं देखें. ठीक है? Okay. Yes, sir. Thanks, sir. Okay, Thank you, sir. Okay. So Harsha, we have functional group that is oic acid, and then unsaturation is nothing, so it will be AN. Then we will have parent, which will start. I have to change the background. So parent carbon will start from here: 1, 2, 3, 4, and 5 carbon atoms. So we are having 5 carbon. So for that, we are going to write pent. Now we are having substituent. So substituent will be OH and Br, right? So we have OH. For OH, we write hydroxy. And for Br, we write bromo. Now, if I want to number, I will start numbering from the
functional group, right? 1, 2, 3, 4, and 5. So we are getting 1 oic acid, and Br is in the third position, so 3 bromo, and OH hydroxy is in the fourth position, so it will be 4 hydroxy. So the name is going to be 3 bromo because alphabetical order. Bromo will come first, and then 4 hydroxy, and like it here. Hydroxy without any gap, I will write pent in 1 oic acid, or you can just write pentanoic acid also. That is also good. The same thing. Understood this? Yes or no? Please tell me. Harsha. Yes, sir. Second वाला आपने आई थिंक पूरा नहीं भेजा सही से. It's not अच्छा नहीं clear. It is Sir, I forgot the cyclo of hexane. साइक्लो ही भूल गए आप, और फिर नंबरिंग भी आपने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है. ठीक है, इसको देख लेते हैं अब. शायद नंबरिंग गड़बड़ा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लेट अस सी. फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? देयर इज OL, राइट? अच्छा, आपने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की? एक सेकंड को देखने की तरह. स्टार्टेड, देखिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया? वहां से स्टार्ट किया. ठीक है, हाँ, 2 नाइट्रो नहीं 2 क्लोरो होगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से. ठीक है, खैर. फंक्शनल ग्रुप इज OH, so this will be all. Then unsaturation is nothing, so it is going to be AN. After that there is parent. Parent is we are going to start with the carbon atom which is having functional group, so like this. And this is a ring of 6 carbon, so it is a ring, that is why cyclo. 6 carbon, that means it is hex. Now the substituent. So functional group is already done. We don't have to worry about OH, but we have to worry about 2 things, that is nitro and chloro. So we have NO2, which is nitro, and we have Cl, that is chloro. Now I can see I have to start with the functional group, right? 1 number carbon. If I go to chloro, अब हम देखेंगे उसके नजदीक substituent कौन सा है. नहीं ठीक है, आपने ठीक है, my bad, आपने ठीक है. 2 will be nitro because यहाँ पे 3, 4 and 5. Correct है आपका. 5 chloro and it will be what? 2 nitro, right? 2 nitro. ठीक है, सही है, आपका नाम सही है. But we'll write 5. The sum should be less. Sum less वाला है पंडा, लेकिन हम लोग वही चीज करेंगे, that we'll start from 1 and then we will move on towards C nitro. But वो देखिए सम वाला लोएस्ट लोकेंट का जो रूल है ना, that works. बट वो दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए आपके पास, लेट अस सपोज वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, देखिए इधर. If I go like this 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो नंबरिंग कहाँ पे आएगी? डबल बॉन्ड के लिए फर्स्ट नंबर आ जाएगा, Br के लिए 2 नंबर आ जाएगा, और OH के लिए 5 नंबर आ जाएगा. ठीक है. If you add 5 plus 2 plus 1, it is equal to how much? 8. Correct? है ना? Shouldn't it start from functional group? हाँ, अब वही तो दिक्कत हो जाएगी ना. लोएस्ट लोकेंट रूल को अगर हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब यहाँ पे अगर इनको ऐड करें हम, 6, 5, 11 और 2, 13 हो रहा है ना? वो सम वाला अगर क्राइटेरिया ले लें हम, इफ यू आर गोइंग टू टेक द सम क्राइटेरिया, सम वाला है ना, देन इन दैट केस 8 शुड वर्क, 13 शुड नॉट वर्क, राइट? बट 13 इज द राइट नंबरिंग. गॉट इट हर्षा? है ना? तो दैट इज व्हाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप. लोवेस्ट लोकेंट इज अ रूल, बट वो जनरली ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कहाँ से स्टार्ट करना. हाँ, मेरा द मेथड दैट आई हैव फॉर इट मे बी लॉन्ग समटाइम्स, है ना, कभी कभार, बट जनरली इट इज गोइंग टू नॉट कंफ्यूज यू. अब आप स्टार्ट करें नंबरिंग, तो सिंस फंक्शनल ग्रुप इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आंसर, सो यू विल आस्क द सब्स्टिट्यूएंट कि कौन नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट है. सो NO2 इज द नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट. You'll have 5 chloro and then you'll have 2 nitro
then without any gaps, cyclohexane 1-all. ठीक है, got this? Yes or no, please tell me. Yes. Okay. Now you are going to write naming of benzene derivative, naming of benzene, naming of benzene and its derivatives. Naming of benzene and its derivatives. ठीक है, ठीक है. हर्ष ये बताएं, in the name of an organic molecule कितने parts होते हैं उसमें? How many parts are there? Each and every name has how many parts? How many parts? Sorry, 4. 4 है ना. SPUF. तो अगर बेंजीन आ जाए ना कहीं आपके पास, तो PUF की जगह आपको बेंजीन लिख देना है. And the rest of the things are going to be treated as whatever is attached on benzene ring will be treated as what? Will be treated as substituent. याद रहेगा? Yes. ठीक है. So for puff we are going to write benzene, और उसके बाद आपके पास जो बचा, then it is going to be what? It is going to be acting as a substituent. सारी चीजें substituent हो जाएंगी. ठीक है. So I will write this here. When benzene is present in an organic compound or organic compound, then end the name with benzene, end the name with benzene, that is puff will be equal to benzene. Any group attached on benzene acts as a substituent. Acts as a substituent. Okay. Done writing? Yes or no, please tell me. Yes. ठीक है. एक आपको अगर याद हो, there is an example in your textbook like this: 1, 2, 3 carbon atom, and then you have a benzene ring. Okay. So puff will be equal to, tell me what, Harsha? Puff is equal to benzene. Yeah. And then what is the substituent attached? ये आपके पास benzene आ गया है. This is sole thing is sole thing parent unsubstituted. अब क्या बचा यहाँ पे? This is remaining, right? So this is an alkyl substituent, correct? Yes. How many carbons here? 3. So what will be the name? Propane. Propyl. तो नाम क्या हो गया? Very simply, and you will start with 1, है ना? You will give this number as 1. So it will be 1 propyl benzene or just propyl benzene. Okay, so 1 propyl benzene. Easy, yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अगला एग्जाम्पल करें. All of these are going to act as what? All of these are going to act as substituent only. ठीक है ना?
So is it 1 ethyl, 2 bromo, 3 nitro benzene? You're saying 1 ethyl, 2 bromo, and 3 nitro Benzene. benzene. हाँ जी. So basically नंबरिंग के केस में you have either ethyl या फिर nitro, है ना? Because ब्रोमो तो दोनों ही केस में ब्रोमो लग रहा था. So yeah, according to alphabetical order बात सही है, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए मिस्टेक नहीं हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1 ethyl बाद में आता, 2 ब्रोमो पहले आता. Yes, sir. ठीक है. So that's the only thing. Otherwise बाकी सारी केस ठीक है. So it can also be 1 nitro. No, it can never be 1 nitro. अगर ये अगर हमने नाइट्रो को 1 दे दिया ना, इथाइल को क्या मिलेगा फिर 3 मिलेगा. सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखिए, चलिए हम लोग फिर से वही करते हैं. देयर आर 2 वेज इन विच आई कैन नंबर इट. आई कैन नंबर इट आइदर द ब्लू वे 1 2 एंड 3, और आई कैन नंबर इट विद द पिंक वे 1, सॉरी उल्टा कर दिया, फिर यहाँ पे 1 2 एंड 3. करेक्ट. तो देखो ब्रोमो को कोई दिक्कत क्या, ब्लू हो चाहे रेड हो, इज ब्रोमो हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं ना. तो ब्रोमो इज नॉट गोइंग टू डिसाइड. कौन डिसाइड करेगा? इथाइल और नाइट्रो में से. So ethyl starts with E, nitro starts with N. कौन सा आता है पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? E. तो E को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, और E वाला E को हम लोग स्मॉल नंबर देंगे, है ना. तो E को अगर ब्लू में देखा जाए तो E इज गेटिंग 1 नंबर. ठीक है. और अगर रेड में देखा जाए तो E इज गेटिंग 3 नंबर. तो कौन सा लेंगे, ब्लू या रेड? Blue. मेक सेंस? Yes. another one. Two bromo, 1 chloro, 3 fluoro benzene. 2 bromo, then 1 chloro, 1 chloro, 3 fluoro. 3 fluoro, और 4 fluoro. Oh, 4 fluoro. देखने से. So the only way to number it, either I will start from here 1 2 3 4 देंगे numbering, or I will start from here 1 2 1 2 3. हाँ ठीक है, करेक्ट है. वेरी गुड मिस्टर. ठीक है. नाउ ये तो आपको समझ में आ गया है ना इसकी नेमिंग. बट जनरली जब बेंजीन रहता है ना, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, you have OH group, so simply it will be hydroxybenzene, right? है ना. OH जो होता है हाइड्रोक्सी होता है, करेक्ट है ना, और फिर बेंजीन लगा देंगे. बट देयर आर सम कंपाउंड्स which are so available in nature, और जिनका इतना ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, they are used too much in organic chemistry,
सो उनके नामों को ना, उनके नेम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है. सो instead of hydroxybenzene, everyone is going to call this as phenol. Okay, so this is known as benzene derivative. तो benzene में OH लगा दिया तो क्या बन गया, phenol बन गया. ठीक है. So there are some important benzene derivatives that you will have to memorize. So please write this. Some important benzene derivatives. Some important benzene derivatives. ठीक है. So this will be carboxybenzene, but इसको carboxybenzene नहीं बोल के इसको बोला जाता है benzoic acid. The name of this compound is, but if I type it out, okay. This is benzoic acid. ठीक है. benzoic acid के बाद if you have a CHO, ठीक है, and you can also have C double bond O CH3 और अच्छा ठीक है, ऊपर नीचे लिखा है तो वैसे लिख देते हैं. एक काम करते हैं हर्षद, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ऐसे लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक. अदरवाइज इट इज गोइंग टू टेक टू मच स्पेस, है ना, एक साथ लिख देते हैं. ठीक है. So benzoic acid, benzaldehyde, acetophenol and एक आपके पास होता है, हाँ, you can have OH. And there can be OMe या OCH3. ठीक है. Sixth would be CN. So this is known as benzaldehyde, and this compound is known as acetophenol. This is known as phenol. This is known as anisole. This is known as benzonitride. This is known as aniline. ठीक है. एक और 8 सीट नंबर में लिख लीजिए. मिनट इज बेंजीन में CH3 लगता है तो उसको बोलते हैं टोलोइन.
Done, sir. डन, ठीक है। तो अब जैसे इनका हम लोग वी कैन इंस्टेड ऑफ बेंजीन, जैसे पफ में बेंजीन आ जाता है, सो इफ सच ऑफ दीज सच फ्रैगमेंट्स आर प्रेजेंट, तो पफ की जगह ये फ्रैगमेंट आ जाएंगे ना। एग्जांपल्स आपको हम समझाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CO, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे COH हो, कैन हैव COH एनीवेयर। लेट्स सपोज वी आर हैविंग COOH हियर, यहाँ पे आपके पास Br ग्रुप आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया लेट अस सपोज CH3 ग्रुप, राइट। सो ऑब्वियसली अब दिस फ्रैगमेंट इंक्लूडिंग COOH and the complete benzene ring, ठीक है। इस पूरे फ्रैगमेंट का ये जो पफ हो जाएगा, पफ विल बी व्हाट, नॉट बेंजीन, इट विल बी बेंजोइक एसिड, गॉट इट। Yes. और सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या है हमारे पास, वी हैव ब्रोमो एंड व्हाट डू वी हैव मिथाइल, सही है। अब नंबरिंग करना आपके लिए और आसान, यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन विच इज हैविंग COH, यहीं से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, दैट इज दैट, बिकॉज दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर मेन फ्रैगमेंट, राइट। मेन फ्रैगमेंट बेंजोइक एसिड है, तो जिसकी वजह से ना, so this COOH is responsible for the name to be benzoic acid. That is why we are going to give that carbon atom. It is now acting like a functional group. You can see that, right? कि आपका end वाला name change हो चुका है. So now one, और उसके बाद methyl and bromo में obviously we are going to give preference to bromo because it is going to be alphabetically preferred 2, 3, 4, 5 and 6. तो आपके पास 2 bromo है and you have 6 methyl. So the name of this compound is going to be 6-methyl. Oh, my bad. We'll start with 2-bromo. 6-methyl. And then just the puff, that is benzoic acid. Got it, Isanuti Salmi? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आप कहीं कंफ्यूजन ये हो सकता है, सर अगर यहाँ पे हम अगर CH3 को ले लेते तो टॉलुइन हो जाता मेन फ्रैगमेंट, करेक्ट? Yes. है ना। तो हमारे पास अभी भी वी आर गोइंग टू यूज द सेम रूल एज वी यूज्ड फॉर द फंक्शनल ग्रुप लिस्ट, कि COH को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद नाइट्राइल हमने लास्ट में लिख दिया, लेकिन नाइट्राइल को दिया जाएगा, देन बेंजेल्डिहाइड, देन एसीटोफेनॉल, देन फेनॉल, देन एनिसोल एंड देन एनिलीन। ये इन जेनरिक ऑर्डर है, बता रहे हैं एक बार, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम आएगा नहीं, लेकिन ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा दैट दीज फंक्शनल ग्रुप आर गोइंग टू बी प्रेफर्ड ओवर मिथाइल वगैरह के ऊपर, ठीक है। Okay, so COH, CHO, these are going to be preferred over methyl, at least methyl. Methyl हो गया, NH2 हो गया, इन सब में ज्यादा प्रेफरेंस होगा COH वगैरह का। Got this? Yes, sir. एक एग्जांपल आप खुद से करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Sir, won't we count the C in COH? Sorry? Sir, won't we count the C in COH in the first example? काउंट मतलब नंबरिंग? Yeah, sir. नहीं, नंबरिंग उसकी नहीं होगी, बिकॉज पेरेंट की नंबरिंग कहाँ होती है? इट इज एक्टिंग लाइक अ पेरेंट आल्सो, Okay. जैसे बेंजीन की नंबरिंग नहीं होती है, राइट?
Yes. उसी तरह से and इसका मतलब है कि it is obvious that first number will be given to COOH. ठीक है, जब हम लोग अगर आपको 2-bromo-6 methyl benzoic acid बनाने आ गया, so numbering start from the carbon atom which is holding COH. ठीक है, So 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde. and only 3. 3-bromo-5-nitrobenzaldehyde. Yeah, correct. सही. वेरी गुड, करेक्ट. अब देखिए आखिरी चीज जो है इसमें, दैट इज नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. बेंजीन के अंदर ही बट नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड. If you carefully look at a benzene ring with one group attached to it, ठीक है, आपके पास कितने हैं? You are having only one group attached. ठीक है, so let's erase this. Get this here. Okay, so let us suppose here you are having some group, है ना? No matter what, there is some group here. So if you see, then this red position is similar to this red position, right? Correct, yes or no, please tell me. दोनों ही सेम है ना? कैसे दिखेगा सेम है? देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए यू हैव सम you have let us suppose Br और यहाँ पे आपके पास है फ्लोरो, दूसरा है आपके पास ऐसे Br और यहाँ पे आपके पास फ्लोरो. Both the compounds are going to have same ring, yes or no, please tell me. Yes, sir. है ना? That is why both the we can say that both the positions are same, है ना? दोनों positions क्या है? Same है. Similarly, if you look here, the blue position यहाँ पे ये blue वाला और ये blue वाला, this is also same. Correct है, yes or no? And then this one green है जो अलग है ना? ये green वाला अलग है. Now, since we have a certain number of positions available for अगर एक और substitution हो जाए तो, है ना? तो either red में substitution हो सकता है या blue में या फिर green में. तीन ही cases बनते हैं, right? If you are going to have di substitute, मतलब समझ में आया ना? दो ग्रुप बेंजीन में लगे हुए हैं, ठीक है? एक के बाद दूसरे के लिए जो चांस बनती है वो सिर्फ 3 है. That is why we gave it some different name. इसको बोल दिया जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्थो पोजिशन. What position, tell me? Ortho. ऑर्थो. ऑर्थो पोजीशन को आपको कैसे याद रखना है? इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर इसको ना बहुत दिल पे मत लगा के रखिएगा कि ऊपर वाले से दूसरा वाला कार्बन ऑर्थो होता है, इधर वाला कार्बन ऑर्थो होता है, ऐसे नहीं याद रखना, ठीक है? कैसे याद रखना, हम आपको नाम बता रहे हैं, वैसे याद रखना डेफिनेशन से.
आप क्या रखना, नो कार्बन इन बिटवीन, नो कार्बन इन बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ऑर्थो नाम तभी आएगा, you will use the word ortho when there are two groups at least. How many groups, tell me? Two groups, only for two groups at least, क्या at max also. Ortho is going to be used when you are having two groups, and those two groups, they don't have any carbon in between. What's in mind? They will not have any carbon in between. ठीक है, ध्यान दीजिए. The next this one is known as meta, जो बोलते हैं meta position. Here what we have, one carbon in between groups, and at last we have the para position, जिसको बोलते हैं, here we are going to have two carbons in between the groups. बात समझ में आई हर्षा? Yes. ठीक है, अब हम कुछ बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे, बताइए ना. दिस इज ऑर्थो, मेटा और पैरा. हर्षा देखिए 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 अभी देखिए देखिए, दिस इज ऑर्थो, मेटा और पैरा. So the one with ये here, सब, सॉरी, the which position? which person नहीं, ये this compound is going to have ortho, meta और para. Select the position of VR. हाँ हाँ, br का पोजीशन. Yeah, br position. The meta. Ortho, meta and para are defined only when there are how many groups? कितने ग्रुप होने चाहिए? So, टू ग्रुप्स. ठीक है, yeah. हाँ नहीं भाई, हम कह रहे थे दिल पे नहीं लगाना है उसको. ठीक है, अच्छा आप बताइए, अब बताइए आप. अब दो ग्रुप्स आ गए आपके पास, है ना? नॉट एनी फ्लोरो एंड ब्रोमीन, इनमें क्या रिलेशन है? ऑर्थो का रिलेशन है, मेटा का या पैरा का? Ortho. ऑर्थो, वेरी गुड. ठीक है, तब आपको समझ में आ रही चीज है. अभी फिर से बताइएगा. ठीक है, अभी कुछ लिखिए मत. Me is methyl. ठीक है, what is the relationship here? Meta. Very good. What is the relationship here? Para. Para. Very good. ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से. मान लीजिए आपके पास है कुछ इस तरह से. What is this? Meta. मेटा. ओके, ठीक है. अब देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा. सो वी हैव फ्लोरो एंड ब्रोमो. ठीक है, फ्लोरो एंड व्हाट डू वी हैव? Bromo. ब्रोमो. सबसे पहले आप लिख लीजिएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप. यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप है क्या? ओ. पहले आप लिखिएगा ब्रोमो, ओ ब्रोमो, फ्लोरो, बेंजीन. You got this, Jasola? Please tell me. Yes. Just a second. Can no number in? हाँ, नंबरिंग की जरूरत नहीं है ना. ओ ब्रोमो फ्लोरो बोल दिया, का मतलब क्या हो गया? Okay. अगल बगल में है ना. गॉट इट. तो इसी वजह से हम लोग नहीं यूज करते नंबरिंग डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए. ओनली, दिस इज ओनली फॉर डाई सब्स्टिट्यूशन. सो अब इसमें हम एक दो चीजें आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम एग्जांपल्स देंगे, तो वो आप लिखिएगा. ठीक है, सो फॉर दीज लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल सी. सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके पास OH आ गया, COH आ गया, CHO आ गया, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट दिस OH प्लस द बेंजीन रिंग is going to be what? Tell me, ये क्या हो जाएगा? बेंजीन में OH लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? Phenol. ठीक है, तो इसका एंड करेंगे फिनॉल से. पफ विल बी फिनॉल. अब मिथाइल को बस आपको करना है. मिथाइल कौन से कार्बन पे है, कैसा पोजीशन है? मेटा पोजीशन पे है, राइट? सो एम मिथाइल फिनॉल हो जाएगा. गॉट दिस? Yes. Sir. ठीक है, चलिए प्लीज इसको कीजिए, आगे कीजिए.
NO2 वाला करके बताइए कौन स्टूडेंट। So p-chloronitrobenzene. क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बहुत ही बढ़िया। बीआर के लिए क्या करेंगे देखिए, फॉर बीआर व्हाट वी विल डू, 2 बीआर है तो आपके पास डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमो बेंजीन, सही है। नाउ ये कौन से पोजीशंस में है, मेटा पोजीशंस में, सो वी विल राइट एम डाई ब्रोमो बेंजीन, गॉट इट। Yes, sir. Sir, can you scroll up? हम्म, Answer. तो आप ट्राई करेंगे अपने एनसीईआरटी से सवालों को। चलिए ठीक है, एक चीज हम लोग कर देते हैं, एक आपको ना कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं उनको हम दिखा देते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, मतलब कन्वेंशनली इनको नेम नहीं किया जाता है, सो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। सो नॉन कन्वेंशनल नेम्स कुछ आप लिख लें, बस एक दिमाग में रहना चाहिए, रेयरली इनका यूज होगा बट स्टिल नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल कंपाउंड्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास हियर आल्सो यू हैव COH, यहाँ पे भी आपके पास COH और यहाँ पे भी आपके पास COOH है जी। अब एक बात बताइए, अब कैन वी टेक एनी पेरेंट चेन विच विल इंक्लूड ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड? No, sir. नहीं ना, दैट इज वाई इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ और यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं देखिए, आपके पास यू हैव अ सिंपल चेन ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं इसको पेंटेन। सीधा क्या लिख दिया इसको, पेंटेन है हमारे पास, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे एंड फिफ्थ कार्बन पे। सो वी राइट 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, गॉट इट। Yes, sir. So we won't include the numbering of the functional group, right? We won't include the numbering of, we have included no 1 3 5 tricarboxylic acid. So like C of COH. That will be not included in the parent chain. That is also why we are not writing oic acid, we are writing carboxylic acid. तो कार्ब लिख दिया मतलब कार्बन भी इंक्लूड करके आपको लिखना, ठीक है। Okay. सो आप लोग what you need to do, you need to just take the
कार्बन एटम्स ऑफ एल्केन फंक्शनल ग्रुप का नहीं लेना है. अच्छा ठीक है. तो अगर आपके पास इस तरह से आ जाएगा CHO CHO CHO, then we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon ऐसे, and these group are what? Aldehydes, right? Aldehyde नहीं लिख के इसको लिखते हैं carb aldehyde. So this will be what? Propane 1, 2, 3 tricarb aldehyde. ठीक है. सिमिलर सी चीजें होती हैं जब आपके पास रिंग में इस तरह की चीज आ जाए, CHO आ जाए. So you will write cyclopentane 1, 2 dicarbonaldehyde. अच्छा ठीक है. तो अच्छा, एक दो और आप चीजें बता देते हैं. ट्रिवियल नेम. How will you name this? Tell me. CH3, CH2, OCH3. the option is the substance. OCH3 क्या हो जाएगा? मीथॉक्सी हो जाएगा ना. Okay, yeah.
like 2-methoxyethane. 1-methoxyethane ना, 2 क्यों होगा? Okay. सही। Yes. अब देखिए जरा इसको ना एक कॉमन नेम से आपने जैसे बोला, दिस वुड बी ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, मिथॉक्सीइथेन, राइट? ठीक है, 1-methoxy मतलब 1 यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आई होप यू नो दैट। नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप एज इट इज, इज नोन एज ईथर। जैसे कीटोन होता है, अल्कोहल होता है, तो इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं, ठीक है। नाउ ईथर इज गोइंग टू हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स, है ना? ओ के इधर एक अल्काइल ग्रुप और इधर एक अल्काइल ग्रुप। सो दिस अल्काइल ग्रुप इज व्हाट? इथाइल, दिस इज मीथाइल। इसके नाम को ऐसे बोल देते हैं, इट इज इथाइल मीथाइल ईथर। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा बताएं? Diethyl ether. डाइइथाइल ईथर। अब इसी तरह का कुछ होता है कीटोन के साथ, ठीक है। ये तो ईथर का केस हो गया। इन द केस ऑफ कीटोन व्हाट हैपेंस, लाइक या सी डबल बॉन्ड ओ, ओके। तो इस फ्रैगमेंट को तो हमने बोल दिया कि ये तो कीटोन है, राइट? दिस इज कीटोन। और ये इस साइड, दिस इज इथाइल, दिस साइड इज मिथाइल। नाम हो जाएगा क्या इसका? इथाइल मिथाइल कीटोन। गॉट इट हर्षा? Yes, sir. You wrote it down, yes or no? Yes, sir. आज के लिए इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हमारा असल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, जो कि शायद आपको स्कूल